our commitment from day one. ये जो भी यहाँ पे आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं या जिनको तफाबोट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर उन्हें कुछ भी नॉलेज चाहिए, बुलिश मार्केट में कैसे काम करता है, बेरिश में कैसे करता है, किसी भी सिचुएशन में ये कैसे काम करता है, या कोई भी क्वेरी चाहिए हो, तो आज उन सबका निवारण हम लोग यहाँ पे करेंगे. In the whole global industry, we are one of the only company that is very, very face front, that we're obvious, we're in the community, we're always there in the community. I also believe that Tafabot system is the only company that you can find the management team or the partners, the founders are absolutely sound technical people, and we're able to explain to you every single details. Now, that is one strength that we have at Tafabot, and that's why we keep improving to make sure we always give you the best. तफाबोट पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड में एकमात्र ऐसी ऐप है जो आप लोगों को, जिसमें मैनेजमेंट आपके सामने है और जितनी भी चीजें हैं जो वो बैकएंड है, या यहाँ पे आपको कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए या कुछ भी देखना हो, तो सब कुछ आपके लिए ओपनली अवेलेबल है. And our model of business is very, very simple. Our model of business is that our users are making profit. It is when our users does make profit that we as a company also profit. So it is always in our best of interest to provide system that is not just secure, but also very, very profitable. तफाबोट एक ऐसी ऐप है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको किसी भी सिचुएशन में प्रॉफिट निकाल के देती है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है, तफाबोट का जो प्रॉफिट है, वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है. तो इसीलिए हमारा एक ही ध्येय है, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने मेंबर्स को प्रॉफिट निकाल के देना. हमारे साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबको प्रॉफिट निकाल के देना. तफाबोट ऐसे ही काम करता है. Same. As we try to do that, there are also other security we want to put in place to always ensure that our users' safety is always paramount, and not just the profitability of the user, but also the full safety of our user. Part of the things we're going to show in this section is how we want to protect the user safety. हमारा एक ही लक्ष्य होता है. प्रॉफिट के साथ साथ जो हमारे लिए दूसरी चीज मैटर करती है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, वो ये है कि जो उनका प्रिंसिपल है, जो यूजर्स की सेफ्टी, प्रिंसिपल की सेफ्टी है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरी है. कि प्रॉफिट के साथ साथ उनका प्रिंसिपल भी सेफ रहे, उन्हें किसी तरीके से उनके प्रिंसिपल को नुकसान ना हो. और आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे. आप सबको ये बताएंगे कि तफाबोट कैसे काम करता है कि यूजर्स को उसमें कोई नुकसान ना हो. सैम. Very, very good. So after this meeting, the document I'm going to be sharing is also going to be available globally for your community in Hindi and the rest of that. Also, we are also producing the Tafabot app in Hindi. So you have the Hindi community or the Asian community have a full flowing system that they can understand absolutely. इसके मीटिंग के बाद हम लोगों को आप मीटिंग में आप लोगों को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और वो चीजें प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि तफाबोट में कैसे इन्वेस्टमेंट करके, किन चीजों में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं. वो सारी जानकारी आज आपको दी जाएगी. So after this meeting, you should look forward to all of our announcement channel, including the Indian Telegram group, to get these documents that I'm going to be showing. इसके मीटिंग के बाद आप इंडियन टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसके लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है इससे रिलेटेड मीटिंग से आज वाली, वो आपको वहां पे मिल सकते हैं. तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हिंदी कम्युनिटी वाले को, और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिल जाएंगे. Perfect. Once again, our goal as a company is not to be the guys who makes you profits this month or in the next 6 months. We want to be the guys who makes you profits still yet in the next 2 years, in the next 5 years, that you're still running on profits in Tafabot. So we're here for the long run, which is why we're installing all of the parameters that we're currently doing. हम ये चाहते हैं कि आप आज भी प्रॉफिट लें, 6 महीने बाद भी लें, 2 साल बाद भी लें या 2.5 साल बाद भी लें. आप जब तक हैं यहाँ पे प्रॉफिट लेते रहें. हम यहाँ लॉन्ग टर्म पे काम करने के लिए आए हैं. छोटे लेवल पे हम यहाँ काम नहीं करना चाहते. ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 महीने, 6 महीने, 1 साल काम करके जाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक हमारे साथ पैसा कमाएं. इसलिए हम इस मार्केट में हैं. Perfect. So the document you're seeing is called the Tafabot Stream and SAFU, which means Tafabot Trade and Risk Management System, and also Tafabot Asset Fund for users.
आप जो डॉक्यूमेंट आप सामने देख रहे हो ये है तफाबोट ट्रिम्स एंड साफू। इसमें ट्रिम्स जो है वो ट्रेड एंड रिस्क मैनेजमेंट है और साफू जो है वो सिक्योर एसेट फंड हमारे यूजर्स के लिए, सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर्स। Perfect. Once again, like I stated, our goal has always been to make sure that we achieve profitability for our users in the best hands-free model. Means that the user doesn't need to put in a lot of parameters or be very, very technical to be able to use Tafabot. And that is what we've always strived to achieve. जैसे हमने पहले आपको बताया था कि हमारी एक ही जो है वो हमारा लक्ष्य है कि हमारे यूजर्स को प्रॉफिट आए, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होना चाहिए, डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए, टेक्निकली भी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए बड़ा आसान होना चाहिए ताकि आप लोगों का प्रॉफिट आराम से निकले और बिना किसी डिफिकल्टीज के निकले। तो ये इसी में आपको आपने नीचे बताया हुआ कैसे कर सकते हैं आप काम। Perfect. So part of the things we want to show is also how you want to set up the bot, what are the risk parameter, what's to expect with Tafabot, what is the worst thing that could happen in Tafabot. We want to show you all of those so you have better clarity to become extremely profitable. हम अब इसमें ये बताना चाहते हैं कि आप टफाबोट में इसमें आप पैसा कैसे कमाते हैं, इसमें रिस्क की परसेंटेज कितनी है, कैसे इसको काम करता है और कैसे इसको ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के सामने। Perfect. Now, one of the things that happens in Tafabot are part of stuff that our users do. For example, I'm going to show you. So if I go to my Tafabot app, अगर मैं अपनी तफाबोट ऐप पे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, क्या है। users are always prone to look at the top performing markets. Like I see over here, Joe is doing 60%. And when you see the top performing markets, you just want to jump right into all of those markets like Joe, like Lena, Apra, and the rest of them. अब आप जाएंगे वहां सामने आप देखते हैं कि कौन सी जो वो है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चल रही है मार्केट में, और जब आप उस पर देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ किस मार्केट में हमें जाना है। वो चाहे आप देख सकते हैं जो है, वो लीना है, वो XXP है, या जो कुछ भी है जो टॉप परफॉर्मिंग मार्केट है वो आप सबसे पहले उसमें देख सकते हैं। Now, part of the things that all of these markets do, few of them which we're going to talk about, like this is Tomo. These are a lot of very low cap markets that can easily be pumped by anyone who has enough money to do that. अब जैसे आप ये तोमो की देख रहे हैं, ये एक बड़ी लो उसकी वो मार्केट है कि आप इसमें कितना भी किसी भी तरीके से जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके और छोटे से या बड़े से आप इसमें वो कर सकते हैं। पैराग्राफ इसके देख सकते हैं आप इसके। So this is an example of Tomo's markets around here in May 23rd, and this was how far Tomo went in one day, and it's back here for 135% price movements. अब आप यहाँ पे देख रहे हो तोमू कैसे इतनी ऊपर गया और एक ही दिन में इतने ऊपर जाके 135% वापस नीचे भी आ गया सेम। Now all of this market you can see over here happened in less than 1 hour. The price went 100% and back down in less than 1 hour. ये आप जो देख रहे हो मार्केट में जहां पे निशान लगाया ऐसे हमने, ये एक घंटे के अंदर 100% ऊपर जाके और फिर वापस से नीचे आ गया है just एक घंटे में। Now let's say that you're trading this type of markets with $1,000 capital. अब आप इमेजिन करो कि आप इस मार्केट में इस तोमू में आप ट्रेड कर रहे हो $1,000 की कैपिटल के साथ, and your bot understands that it has to use $1,000 to be able to follow the market. It doesn't matter how far this market wants to go, to make sure that your capital is always secured. तो ये बोर्ड जो हमारा है वो ऐसे काम करता है कि ये जितना भी मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए या किसी भी उसमें है, नेचर में है, हमारे जो रोबोट का काम है या उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि आपके 1,000 का जो कैपिटल है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए और उसमें जो प्रॉफिट कैसे निकालना है। Perfect. When you're trading markets like this, few of the things to note, one of them could also be what are the fees for those kind of pump and dump
markets. I'm going to show you an example of the fees for such kind of markets the past few days. So this is an account trading with $1,000, like I gave an example over there. इसमें जो पम्प एंड डंप की जो मार्केट है या जो कुछ भी होता है उसमें कैसे फीस जाती है, कितना क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या चलता है, उसका नेचर कैसे चल रहा है, उसमें फीस कितनी कटती है, वो सब हम आपको इसमें दिखा रहे हैं अकाउंट में. Now, your exchange have what they call the funding fee, which is a fee that they charge every 8 hours for your trade. ये अब जो आप फंडिंग की जो फीस है, जो बाइनेंस आपको फंडिंग कर रहा होता है, जो आपके मार्केट में आपके अकाउंट में पैसा कम है, लेकिन उसने बाइनेंस ने आपको फाइनेंस कर रखा है, ये हर 8 घंटे में आपसे फी चार्ज करता है. सैम, If I go through my accounts, I'm going to see I got charged a fee for Lena today for $180. अब ये सैम जो अपना अकाउंट दिखा रहे हैं आपको, इसमें लीना के ऊपर जो बाइनेंस ने इनसे फीस ली है वो $180 है. 181 समझ लो ऑलमोस्ट. If I keep going, I got charged another fee of $294. उसी लीना के सेम उसमें $294 की दोबारा से फीस लगी हुई है. Now, automatically, if I have only $1,000 in my accounts, automatically I will have already minus over $480 from the charge. ये अगर 1,000 का बाइनेंस का अकाउंट हो, सिर्फ उसमें 1,000 पड़े हो, तो आप देख सकते हो लगभग $500 के आसपास जो है वो फीस लग चुकी है लीना की उसमें. Now, when I have this kind of charges and I don't have any other money in my account is just $1,000, Tafabot will not be able to see this capital that it's intended to use for your strategy. And by not seeing that capital, it could make your strategy go wrong. Tafabot ये जो बाइनेंस जो चार्जेस आपसे ले रहा है ये नहीं देख सकता, इस पे उनका कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं. तो अगर ऐसे कोई चार्जेस आपके अकाउंट्स पे से कट रहे हैं तो तफाबुट उसमें कुछ भी नहीं कर सकता. इसमें ये वाला नुकसान आपको हम किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते. Now, if you keep trading that market and the exchange don't find even enough capital to cover up for your floating, the exchange can close your accounts for zero. अब अगर ऐसे ही आपकी फीस कटती रहती है और आपके अकाउंट में से पैसा नीचे जाता रहता है तो जो आपका जो वॉलेट है वो आपके अकाउंट को जीरो करके बंद कर देगा और उसमें तफाबुट कुछ भी नहीं कर सकता. उसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है और ना ही उस पे हमारा कोई होल्ड है. Now, all of this are industry problem that are general on all of the exchange. Now, in Tafabot, our goal is always when we see situations like this to provide instant solution on how users can also be profitable. वर्ल्ड वाइड जितने भी वॉलेट है उन सब के साथ ये समस्या आती ही है, लेकिन जैसे ही हमारे कंसर्न में चीजें आती हैं कि हम कैसे अपने यूजर्स का नुकसान बचा सकते हैं तो हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं. उसी के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी है. Now, part of our solution is to, as much as possible, eliminate trading pump and dump coins. अब ऐसी उसमें जो सोल्यूशन है उसमें हमारा जो ये पार्ट है वो ये बताने के लिए है कि अवॉइड करना है पंप और डंप वाले जितने भी आते हैं ट्रेडिंग के लिए आते हैं उन सबको हमने अवॉइड करना है. So how do you select markets that you want to trade? Number one is you want to look for large market cap, markets with a large market volume. अब कैसे इस पे ट्रेड करना है, जो हमारे कुछ वो पॉइंट्स हैं उनमें से एक ही है कि लार्ज मार्केट कैप जितना भी हो, जितने भी लोगों का उनका एक बार देखना है कि उनका मार्केट कैप कितना बड़ा और कैसे क्या है, हमने उन्हीं कोइंस को चूज करना है. And at the same time, you want to also look for markets or coins that are much more distributed. और आपने ऐसे कॉइन को भी ध्यान देना है जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड किए हुए हैं, आपने उन पे भी ध्यान देना है. Now, we've listed a few of those coins as part of our coin recommendations that if you want to set your market, these are coins that you can set your trades on. अब ये जो नीचे आपको कॉइन दिखाई दे रहे हैं, हम प्रेफर करते हैं कि आपने अगर अच्छा प्रॉफिट निकालना है और ये फीस वगैरह के झंझट से भी बचना है तो आप इन सभी कॉइन्स में से चूज करें और इनके ऊपर अपनी ट्रेडिंग करें. Like I said earlier, this document is also going to be available for your community in your language.
अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी देश उस भाषा में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में या इंडियन लैंग्वेजेस में, सभी भाषाओं में ये टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहेगा आपके लिए। So every time you want to trade, these are the markets that we recommend for you to set up for. Sorry, can you repeat it again, please? So every time you want to trade, these are the markets that we recommend for you to trade on. अब जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए ये कॉइन्स रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन्हीं पे ट्रेडिंग करें, आपके अच्छे प्रॉफिट के लिए और कोई नुकसान ना हो उसके लिए। Now, the next thing to also note about the security system is also capital distribution. अब ये जो अगला वो है वो सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ कैसे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये इसके बारे में हम जानकारी देंगे। Now, capital distribution is important not just for security, but also for profitability. कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसीलिए है कि सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी भी हो, इसीलिए है कि आपका प्रॉफिट भी निकले इसमें। सैम, For example, if you're trading with $50,000, it is recommended that you spread your capital to around 20 of the recommended markets. अब आप जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए आप $50,000 के साथ इन्वेस्टमेंट अपनी डालते हैं और काम करना चाहते हैं, तो वो $50,000 आपने कैसे ऐसी जो हमने आपको ऊपर कॉइन्स बताए हुए हैं, इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना और कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो इसमें बताया जाएगा। If at any point that any of the markets is not making as much profit as you want, the other one will be making profits. अब सिर्फ अगर जैसे एक मार्केट में आपने किसी पे पैसा लगाया हुआ लेकिन वो जितना प्रॉफिट आप सोच रहे हैं कि आना चाहिए या जितना वो आपके सोच के अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा, आपके सोच के हिसाब से नहीं आ रहा, तो आप जितना ज्यादा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉइन्स में उतना बेटर रहेगा, दूसरे वाला आपको वो प्रॉफिट निकाल के देगा। Perfect. In this document, you also see setting up your bot on how to set up each of the strategy easily available in the documents. डॉक्यूमेंट्स में आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ अब इन डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए इजीली अवेलेबल रहेगा, आपको सुविधा के लिए ये ठीक रहेगा उसमें। Now, there are things also that you need to note as it relates to trading that you don't need to do. कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको ट्रेडिंग में नहीं करनी है, वो अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या चीजें आपको नहीं करनी है ट्रेडिंग के लिए। Number one thing is that you don't want to overtrade. पहला वो है कि आपने ओवर ट्रेड नहीं करना, किसी भी एक उस पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, ओवर ट्रेड नहीं करना, इसका सबसे पहला पॉइंट ये है। Overtrading means setting your bot for more capital than you have available on your exchange. ओवर ट्रेड का ये है कि आपके उस पे अगर बहुत ज्यादा वो लगा हुआ है तो आपने सिर्फ एक ही उस पे सारा कैपिटल नहीं लगाना है, वो आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है। So if you have $1,000 on your exchange, all your bot settings should not exceed $1,000 capital. आपने अगर $1,000 आपके उसमें पड़े हुए हैं तो आपने वो हजार सारों पे नहीं लगाना है, उसको कैसे फंडिंग डालनी है उसको समझदारी से फंडिंग करनी है। Now, this is because your bot takes into consideration the capital that you've set to be able to execute properly. Can you repeat it again, please? This is because your bot uses the specific capital to execute properly. When it cannot find the capital, it cannot execute properly. ये इसलिए है कि वो जो आपकी कैपिटल है वो उस पे जो आपकी ट्रेडिंग है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर आप सब पे बराबर का वो डाल देंगे तो किसी भी बोर्ड को पैसा नहीं वो मिलेगा, वहां से फंडिंग नहीं मिलेगी और वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा आपके डील को, इसलिए The next thing you don't want to do is to go to the app and just look at the markets that people are trading. A lot of people could be trading different markets for different reasons, and you see a market doing 100% for this person, and it is a pump and dump coin, and you just want to set it up. और दूसरा जो आपने काम करना है कि ये जो आप जब ऐप खोलते हैं तो उसमें जो टॉप वो होते हैं परफॉर्मिंग वो चल रहे हैं, कॉइन्स चल रहे हैं, आपने एकदम से उनको फॉलो अप नहीं करना कि हाँ इसमें बहुत कुछ लग रहा है कि इतनी परसेंटेज निकाल रहा है या इसमें इतना पैसा आ रहा है, क्योंकि उसमें बड़े सारे लोग की हर किसी की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। कुछ ऐसे कॉइन्स भी है जिनमें लोग ट्रेड कर रहे हैं वो पंप एंड डंप की उसमें भी आए हुए हैं या सब कुछ आया हुआ है, तो आपने सिर्फ वो फर्स्ट पेज देख के और टॉप परफॉर्मिंग उसको टारगेट नहीं करना। And other things as it relates to not also reducing your capital after setting the bot, and the bot is already running with a specified capital.
दूसरा काम आपने ये नहीं करना कि जो ट्रेड पे लगे हुए हैं आपके बोर्ड जो लगे हुए हैं, आपने वो कैपिटल वहां से निकालनी नहीं है, उसको कम नहीं करना है, उसको लगे रहने देना है। इसकी वजह से भी आपका प्रॉफिट इफेक्ट हो सकता है। Now, what are the worst case scenario that could happen if you follow the system that we are recommending? सबसे भयावह स्थिति क्या हो सकती है किसमें ट्रेडिंग में और क्या हो सकता है उन सब के लिए आपको कैसे काम करेगा तफाबोट और कैसे आपकी हेल्प करेगा वो आपको अब हम अगले उसमें बताते हैं। Using the Tafabot risk and management system, even if you're trading any of those markets, and most especially the recommended markets, aside the pump and dump that we talked about, your worst case scenarios are the following. वर्स्ट केस सिनेरियो में जैसे होता है कि आप कोई हमारे रेकमेंडेड है या आपने कोई पंप एंड डंप में चुन लिया और उसमें नुकसान होना या यूं होता है कि उसमें लॉस हो सकता है। अब उससे कैसे टफाबोट आपको बचाएगा या कैसे आपको सेव करेगा ये हम बताते हैं आपको। If a worst case scenario is to happen on your trade, the first thing our AI system would do is to execute the capital preservation strategy. वर्स्ट केस सिनेरियो में यूं होता है कि जब हमारे एआई को यूं लगता है कि आपकी कैपिटल को वो हो सकता है नुकसान हो सकता है या कोई वो हो सकता है तो वो उसको एकदम से ट्रेड को रोक देगा और उसको आगे नहीं जाने देगा। The capital preservation strategy is going to keep your account on the float of 3 to 6% maximum. जो इसका कैपिटल प्रिजर्वेशन स्ट्रेटेजी का जो काम है वो जो ट्रेड का फ्लोट है वो उसको रोक देगा 3 से 6.52% के बीच में उसको रोक देगा। This does not mean that your trade will close. This means that your maximum float after right now, using the strategy and using the recommended market, cannot exceed 3 to 6% of your capital. ये ऐसा भी नहीं होगा कि उसने आपकी जो ट्रेडिंग थी उसको बंद कर दिया या उसको कुछ कर दिया। उसका जो मेन वो रहेगा कि इसमें 3 से 6.52% का ज्यादा नुकसान नहीं होगा और वो उसको होल्ड पे डाल देगा जब तक कि मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती। So you will never see a time where you're having a float of 10 or 15% of your capital following the recommended system. फॉलो करते हुए आपके कैपिटल को ये 8-10% या 20% के नुकसान पे नहीं जाने देता, ये इन्हीं नंबर्स पे उसको रोक देता है। In very extreme scenarios where the market wants to go to zero, Tafabot can also execute its extreme safeguard measures to call off the trade. वर्स्ट केस सिनेरियो में जो दूसरा सिस्टम आता है कि अगर यूं लगता है कि 0% में मार्केट चली जाएगी तो जो इसका सेफगार्ड सिस्टम है वो कैंसिलेशन एआई ट्रेड कैंसिलेशन पॉलिसी पे काम करते हुए 10% का कैप रख देता है उसमें। Now this is not expected to happen. The chances are 1 in 1,000. ये ऐसा होता नहीं है जनरली कि ऐसा होना पॉसिबल ही है, हर किसी उसमें हो सकता है। ये 1000 में से एक उसमें केस में ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल जीरो पे चली जाती है। Perfect. Now, from today, we're launching the Tafabot SAFU, which is a secured asset fund for users. अब हम जो दूसरा आज वो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वो है द तफाबोट साफू सिक्योर्ड एसेट फंड फॉर यूजर्स। In the Tafabot SAFU, if at any point that our algorithm triggers the extreme case scenario where it calls off your trade at a 10% negative, the Tafabot SAFU will be covering up for that deficit. किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा हो जाता है कि जो भी अगर हमारा यूं होता है कि 10% लॉस के उसमें पहुंच जाता है तो तफाबोट साफू जो है वो हमें एक इंश्योरेंस देगा कैपिटल प्रिवर्शन की 30% तक का वो हमारे उस पर इंश्योरेंस मिल जाएगी हमें। It means that if your trade ever hits a 10% stop loss, instantly, automatically, the Tafabot SAFU system is going to take charge of 30% of that deficit instantly to your account. जैसे ही आपका जो नुकसान है वो 10% कैपिटल लॉस के उस पे जाता है तफाबोट का जो वो है तुरंत प्रभाव से आपका 30% इंश्योरेंस का वो उस पे लागू कर देता है। Now, there are things to note about the Tafabot SAFU funds.
And also to note that the Tafabot Sappho Fund does not include whatsoever your exchange does. जो Tafabot, can you repeat it again, please? The Tafabot Sappho Fund does not cover up for third-party failure like Binance closing up. जो थर्ड पार्टी का जो फेलियर होगा, अगर बाइनेंस आपके किसी उसमें वो कर देता है, बाइनेंस की वजह से आपका कोई लॉस होता है, तो वो हम कवर अप नहीं करेंगे. जो हमारे Tafabot पे ट्रेडिंग चल रहा है, ये सिर्फ उसी को कवर अप करेगा. The Tafabot Sappho Fund will cover up for issues relating to users who follow the security system and yet hit a stop loss. Tafabot जो वो करेगा, जो सिक्योरिटी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, जो उसमें जो नुकसान होगा, ये उसको कवर अप कर लेगा. बाकी थर्ड पार्टी के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी. Now, a few things to note after all of this is, right now, you want to set your trade to trade all of the new markets that we just recommended. And maybe you have some trade that also has maybe a float of 1% or whatsoever amount of float. What do you do about those trades? Can you repeat it, please? I was like, yeah, sorry. All right. So right now, you want to start setting all your markets to follow the recommended settings so you can also be covered by the Tafabot Sappho funds. आप जो है, अब ये जो हम रेकमेंडेड जितने भी हम आपको कॉइन बता रहे हैं, आप जब ट्रेड करेंगे तो आप इस पे करें, ताकि आप Tafabot Sappho के उससे सुविधाओं से मिल जाए आपको जो उसकी सुविधाएं हैं और आपको नुकसान ना हो. इंश्योरेंस के लिए आप कवर अप हो जाओगे. Now, if you have any trade that is running right now that is on a floating and you close that trade right now, whatsoever floating that trade is on, minus the profit you've made from that particular trade, the Tafabot Sappho Fund will cover up for it immediately. अगर आप अभी ये ट्रेड कुछ क्लोज कर देते हैं जो फ्लोटिंग में है या जिनमें आपको अभी चल रही है ट्रेडिंग जो चल रही है, आप उन्हें बंद कर देते हैं, तो उसमें अगर कुछ नुकसान होता है तो Tafabot का जो साफो तो वो है वो उसको भी कवर अप कर लेगा. इंश्योरेंस जो आपको 30% की उसमें भी मिल जाएगी. To ensure that every user is following the safety system, we do recommend for those trades that are not aligned with the safety system that you call it off. Tafabot का सेफ्टी सिस्टम का जो भी वो है, कॉल इट ऑफ का जो भी सिस्टम चल रहा है, जो कुछ भी होगा उसे हम कवर अप कर देंगे अभी के उसमें. So that all your trade can start with all the safety protocol that ensures that your float will never exceed 3 to 6%. जितने भी आपके ट्रेड रहेंगे जो फ्लोट में है या जो कुछ भी चल रहा है, वो ये श्योरिटी दे देगा कि 3 से 6.52% से ज्यादा का लॉस उसमें नहीं होगा. Once again, we're committed in Tafabot to keep improving, to keep growing, to give your community all the support that we can to ensure that you make the best use of Tafabot. एक बार फिर से हम आप लोगों को अपने Tafabot यूजर्स को ये श्योरिटी दिलवाना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले, आपके प्रिंसिपल का नुकसान ना हो, आपको किसी भी तरह का लॉस होगा तो वो Tafabot के लिए भी लॉस ही है. तो हमारा एक ही ध्येय है कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनको प्रॉफिट मिले और उनके कैपिटल पे, उनके प्रिंसिपल पे कोई नुकसान ना हो. Now, part of the reason why we would recommend you close those so that you don't keep paying the funding fee, like I showed that is currently being charged on those trades. The funding fee is greater than the profits you would make from that trade. जो फंडिंग फीस है, हम आपको इसीलिए कॉइन रेकमेंड कर रहे हैं, जितनी भी चीजें रेकमेंड की हैं वो इसीलिए रेकमेंड की हैं ताकि आपको ये जो फंडिंग फीस है ये प्रॉफिट से भी ज्यादा पड़ती है. तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आपको ये फंडिंग फीस ना देनी पड़े, इसीलिए हम आपको ये कॉइन रेकमेंड कर रहे हैं कि आप इन कॉइन्स में फंडिंग जो है ट्रेडिंग करें. इसके अलावा बाहर जाके ट्रेडिंग फीस वाला जो नुकसान है वो ना झेलना पड़े आपको. Perfect. And once again, I want to thank your community and all of the leaders. We are right now making sure that we provide all of the documents, all of the educational content, all of the application in your language, so we do not have any communication barrier ever again. अब हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि आप लोगों की सुविधा के लिए हर लैंग्वेज में, हर भाषा में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, ग्लोबल लैंग्वेजेस में हम वो कर रहे हैं, और ताकि आपको सुविधा हो, आप जो भी चीज समझना चाहते हैं वो आपकी भाषा में आप टेलीग्राम चैनल पे या डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेंगे वो सारे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे. आपकी सुविधा का हर तरीके से ध्यान रखा जाएगा. And for every leader here, we want to ensure that your network
and your business in Tafabot keeps growing, and we're ready to give the support to grow in your locality. और हम ये आप लोगों को जितने भी लीडर हैं हम आश्वस्त कराते हैं कि आपकी भाषा में आपकी कम्युनिटी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि आपको प्रॉफिट निकले, आपके साथ के जितने लोग हैं उन सबको प्रॉफिट निकले, आप लोगों का नुकसान ना हो। ये तफाबोट के लिए, ये तफाबोट प्रतिबद्धता के साथ वो करता है, कमिटमेंट करता है। Thank you once again. I'm going to take a couple few questions before I do join other community for their own section. If you do have a question, you want to send it into the chat right away. थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में डाल सकते हैं। उसके बाद ताकि कुछ और भी काम है हमें निपटाने हैं, तो आप प्लीज एक बार, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। Perfect. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज चैट में। All right. This person said my capital is small. It's just $200. Hope the safe covers for me too, and not just people with big equity. I'm only trading one coin. Now, part of the things we've talked about for this user is you want to distribute your capital. Even if you have $200, you want to trade 2 coins. And also the safe funds covers for everyone, not just for big capital. अभी किसी का क्वेश्चन आया था कि मेरी एक छोटी सी कैपिटल है, $200 की है, तो मैं क्या उसमें कर सकता हूँ और मेरा कैसे प्रॉफिटेबिलिटी निकल सकती है। तो ठीक है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि आपको नुकसान ना हो, चाहे वो आपके $200 है या $2000 है। तो 2 कॉइन पे डाल के या उसको एक ही कॉइन पे डाल के या कैसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारे लिए हर कस्टमर बड़ा है, चाहे वो $200 के साथ कर रहा है या $2000 या $2 लाख के साथ कर रहा है। Perfect. That user says thank you. Now, once again, yes, if you have ongoing trades right now, like I did state, if those trades are not running on each of those recommended markets, like I said, you might want to call them off so that you can jump into the new system right now that covers up for not more than 3 to 6% floats. अभी जितने भी लोगों के ट्रेड चल रहे हैं या किसी में बंद है, या अगर वो उसको वो करना चाहते हैं 3 से 6% के उस पे लॉस पे कॉल ऑफ करना चाहते हैं, तो अभी आप उसको जंप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए सिस्टम पे अगर आप जंप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। All right, thank you once again. And if absence of no further question, I want to believe that all is sorted out. You're going to get this document right after this call, and we want to make sure that you're as profitable as possible. अभी लगता है सभी प्रश्नों का जो था वो उनको उत्तर मिल गया है। डॉक्यूमेंट्स इस कॉल के कटने के बाद, मीटिंग समाप्त होने के बाद आपको मिल जाएंगे। एंड हम दुआ करते हैं कि आप लोग ऐसे तफाबोट के साथ जुड़े रहें और प्रॉफिट निकालते रहें। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अगर आप करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। Perfect. Another person said, I also noticed that max is part of the recommended coin. Do I need to close my trade? Now, if your max for that user right now is maybe more than the 3 to 6% float, then it would be great to close it to restart afresh, as it should not exceed 3 to 6% floats ever again. अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं अभी अपनी मार्केट को स्विच करके नए वाले उस पर लाना चाहता हूँ सिस्टम पे, तो ला सकता हूँ जी। अगर आपका जो मार्केट कैप चल रहा है वो 3 से 6% के फ्लोट पे चल रहा है तो ला सकते हैं। उससे ज्यादा पे है तो अभी लाना ठीक नहीं है। उसको 3 से 6% के फ्लोट पे आने दें, उसके बाद आप ले आए। Perfect. All right. We still have a lot of persons that keeps joining. I'm just going to take the next 5 minutes. If there are still more questions, and I would like to attend to those. If not, once again, thank you so much. अभी और भी लोग जुड़ रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जो नए लोग आए हैं, क्वेरीज हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो अभी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अगले 5 मिनट हम और इसमें दे सकते हैं। अदरवाइज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तफाबोट को जो के साथ ज्वाइन करने के लिए, तफाबोट पे विश्वास करने के लिए। धन्यवाद।
Right. कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज पूछ सकते All हैं। right. Perfect. I think that's it. Once again, thank you to all leaders. I want to affirm my support to every one of you, so you understand absolutely that we are behind you, we're supporting you, we're cheering you on. We're going to go the long run with you, and we're taking Tafabot to the moon, both all of us together. अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कोई क्वेरीज नहीं है, तो इसके बाद फिर हम यूं करते हैं कि अभी इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तफा बोर्ड पे विश्वास जताने के लिए, तफा बोर्ड के साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि हम बहुत लंबा चलेंगे। तफा बोर्ड को हम चांद पर हम लोग साथ लेके जाएंगे, एक साथ मिलके एक टीम के जैसे हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, और तफा बोर्ड ऐसे ही हम सब लोगों को प्रॉफिट निकाल के देता रहेगा। ये हम लोग आपको गारंटी देते हैं और आपको भी विश्वास दिलाते हैं। After this meeting, we also have in the next 20 minutes with the Spanish community, and in the next 1 hour with the English community. All of these links are also online. If you want to join again to this community after this call, you can also join. एक स्पेनिश इस मीटिंग के बाद एक स्पेनिश लैंग्वेज की मीटिंग है, और उसके बाद एक इंग्लिश सेशन और चलेगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। Once again, thank you so much, Tafabot, Indian team, and do have a great day. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तफा बोर्ड की तरफ से। भारत जितने भी भारतीय लोग इस मीटिंग में आए हैं, ये भारतीय लोगों के लिए मीटिंग थी, तो इसके साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग ऐसी प्रॉफिट निकालते रहें। बाय, थैंक यू वेरी मच गाय। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सैम, थैंक यू वेरी मच।